Everyone, welcome to JKSSB Mock by Toppers. In this video, we'll be covering the important current affairs for 10th of July. Let's begin. Which indigenous rocket was recently successfully test fired by the Indian Navy from INS Kavaratti for anti-submarine warfare? So recently an indigenous rocket was test fired by Indian Navy. So we have to name that rocket. Is it Saksham 3000? No, it's not Saksham 3000. Is it AH-64E? No, it's not AH-64E. Is it BrahMos? No, it's not BrahMos. The right answer is Eraser. And what does Eraser stand for? Extended Range Anti-Submarine Rocket. So Eraser stands for Extended Range Anti-Submarine Rocket. This has been developed by DRDO's wing ARDE Pune. Armament, Research and Development Establishment. So it has been developed by DRDO's this wing ARDE. It will be used to tackle any submarines, as you can see in the image. Now, what is Saksham 3000 here? Saksham 3000 was also in the news recently. It is a high-speed router. High-speed router developed by CDOT, Delhi, Department of Telematics. What is AH-64E? AH-64E is it's nothing. It's an attack helicopter. Attack helicopter that India is buying from USA. Total 6 number of helicopters we are buying from US. BrahMos, is a supersonic missile or missile. So the right answer for the successfully fired Indian Navy anti-submarine warfare is Eraser. This one. Where will the 8th North Zone Regional Conference of State Legal Services Authority be held? So the North Zone Regional Conference of State Legal Services Authority SLSA ये कहाँ पे होगी? On 26-27 July SLSA. इस पर बहुत सारे डिग्नेटरीज पार्ट लेंगे, इंक्लूडिंग द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड दिस विल बी हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर. Which milestone anti-malarial drug did Swissmedic recently approve, making the first ever treatment designed specifically for newborns? तो एक बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू डेवलपमेंट है ये. एक नया ड्रग यहाँ पे अप्रूव हो गया है for the newborns, and it has been done by company called Novartis in Switzerland, and the name of the drug is Cortum Baby. Cortum Baby, it's also known as Riamet Baby. तो जो इन्फेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न्स होते हैं, वेइंग अप टू 5 kgs, उनको ये ड्रग दिया जाएगा टू फाइट मलेरिया. Which initiative was launched by Ministry of Information and Broadcasting to create AI tools converting official text into multimedia? So यहाँ पे Ministry of Information and Broadcasting ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, एक्चुअली एक चैलेंज लॉन्च किया है, जहाँ पे हम पार्ट ले सकते हैं. जो भी डेवलपर्स है वो इसमें पार्ट ले सकते हैं. फॉर व्हाट? फॉर कन्वर्टिंग ऑफिशियल टेक्स्ट इनटू मल्टीमीडिया. जो भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल टेक्स्ट है उसको मल्टीमीडिया में क्रिएट करेंगे. फॉर एग्जांपल टेक्स्ट टू इन्फोग्राफिक्स और टेक्स्ट टू वीडियोज टू मैक्सिमाइज गवर्नमेंट्स आउटरीच, ताकि जो गवर्नमेंट जो भी रिलीज़ करे टेक्स्ट वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके. तो इस चैलेंज का नाम क्या है? हमें बताना है इस चैलेंज का नाम. इसका नाम है कला सेतु. ऑप्शन बी, कला सेतु. ऑल्सो यू कैन सी हियर भाषा सेतु. दिस वॉज ऑल्सो लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. एंड इसमें क्या है कि टू कन्वर्ट लैंग्वेजेस in real time. This challenge has also been issued by
मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। इसमें कम से कम 12 लैंग्वेजेस होनी चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ डेवलप करते हैं तो उसमें 12 लैंग्वेजेस मिनिमम होनी चाहिए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ INS निस्तर रिसेंटली डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी? सो सबसे पहले बता दूं, INS निस्तर जो है, हु हैज़ मेड इट? इट हैज़ बीन मेड बाय हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम। उन्होंने इसको बनाया है। इट इज़ 90% इंडिजिनियस एंड हैज़ बीन डेवलप्ड डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी फॉर व्हाट? फॉर डीप सी डाइविंग एंड सबमरीन रेस्क्यू। तो इट्स अ डीप सी डाइविंग वेसल्स इसके साथ अटैच किए होंगे जिनसे सबमरीन रेस्क्यू किया जा सकता है। इट्स अ नॉन कॉम्बैट शिप। Delivered to Indian Navy by Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam. Which prestigious civilian award was bestowed upon PM Modi during his visit to Namibia recently? मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोज़ में बोला है कि हमारे PM वर ऑन 5 नेशन टूर, तो हमें बताना है कि इस वक्त उन्हें नमीबिया में कौन सा अवार्ड मिला है। नमीबिया की कैपिटल, डू यू नो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नमीबिया? इट इज़ विंडहोक। And we have to guess the award which Prime Minister Modi got in Namibia. Is it Order of the Star? No, Order of the Star was given to PM Modi by Ghana. Order of Most Ancient Welwitschia Marbles? Yes, this is the right answer. Order of Republic was given by Trinidad and Tobago, and Grand Collar of National Order of Southern Cross was given by Brazil to PM Modi. So the right answer will be Order of Most Ancient Welwitschia Mirabilis. What was the official theme of 17th BRICS Summit held in July 2025? So 17th BRICS Summit was held in July 2025. It was held in Rio de Janeiro, a city of Brazil. However, not the capital of Brazil. The capital of Brazil is Brasilia. And what was the theme? The theme was strengthening global South cooperation for a more inclusive and sustainable governance. The capital of Brazil is Brasilia, and the president of Brazil is, just remember, Lula da Silva. Which system did the Andhra Pradesh government launch to combat mosquito-borne disease using AI, drones and Internet of Things (IoT)? तो कौन सा सिस्टम आंध्र प्रदेश ने यहाँ पे लॉन्च किया है? The right answer for that will be SMOS. SMOS, Smart Mosquito Surveillance System. With the help of AI, they will be able to detect areas where there is high presence of mosquitoes, and with the help of drones, they'll be able to spray only those areas. So the answer is SMOS, Smart Mosquito Surveillance System, developed by Andhra Pradesh, launched by Andhra Pradesh. During his July 2025 visit to Brazil, PM Modi set a target for Indian-Brazil bilateral trade to reach $20 billion by which year? तो किस ईयर तक हमने इसको PM मोदी ने सेट किया है टारगेट? The right answer is 2030. Right now we have both import and exports with Brazil. What do we export? We export pharmaceuticals, we export chemicals, and what do we import? We import vegetable oil. We import from Brazil. We also import petroleum, etc., etc. You can look up on the things we import from Brazil and we export to Brazil. So the Prime Minister has set up a bilateral trade a target of $20 billion by 2030. The Jamatha maritime exercise is conducted between which two organizations? तो बताना हमको जामाता मैरीटाइम एक्सरसाइज किन दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कंडक्ट की जाती है? द राइट आंसर इज नॉट इंडियन नेवी एंड जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स. इट्स नॉट इंडियन नेवी एंड जापान कोस्ट गार्ड. नीदर इट्स इंडियन कोस्ट गार्ड एंड जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स. द राइट आंसर इज इंडियन कोस्ट गार्ड एंड जापान कोस्ट गार्ड. जापान कोस्ट गार्ड ने इसके लिए जो शिप यहाँ भेजी है उसका नाम है इत्सु कुशिमा. Remember the name, Itsu Kushima. Jamata, which in Jamata means actually
In Japanese, it means see you later. So on that note, and Jamata, thank you for connecting. See you in the next video.